Good evening, ladies and gentlemen. At this time, we'd like to call to your attention the importance of being illustrated. So, आज लेके चल रहा हूँ मैं अपने वर्क ट्रिप पे आपको। ये 3 साल में पहली बार है कि मैं एक वर्क ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। सुबह के 6:45 बजे हैं। सो लेट्स गो। कैब की वेट कर रहे हैं हम। तो कैब की वेट करना मुझे लाइफ में सबसे गंदा काम लगता है, मुझे आदत नहीं है, बट आई गेस कैब आने वाली होगी। मुझे एक तो गर्मी बहुत लगती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पसीने छूट जाते हैं मेरे। सो द कैब इज स्टिल नॉट हियर। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लाइट मिस हो जाए। साथ रहिए, मुझे अब एंजाइटी होनी शुरू हो गई, इसलिए मैं भूल ही गया था कि मुझे ब्लॉग भी रिकॉर्ड करना है, बट फाइनली आई गॉट टू इट। यस, यही है हमारी कैब। चलिए लेट्स गो। हम कैब में बैठ गए, लेकिन कैब में बैठ के मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आई कि कोई एक एक्सेसरी है जो मैं घर भूल गया हूँ, जो मेरे पास होनी चाहिए थी इस ट्रिप के लिए। सो आप लोग गेस करिए कि अगले जितने भी मिनट तक ये ब्लॉग चलता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं भूल गया हूँ। And it's something that's more of a variable, so I think you'll be able to guess it. But let's see if you are able to. वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आखिर क्या था जो मैं भूल गया और मिस कर गया। But yeah, now I feel कि मेरा OCD ओवरकम कर रहा है मुझ पे कि उत्कर्ष, how can you do that? मैंने उसके बारे में सोचा था and I still forgot about it. With the kind of rush that there is, I'm pretty sure that I'm gonna miss my flight. Man, it's crazy. This country is crazy. यहाँ पे भीड़ देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फाइनली बहुत आगे जाके एक गेट पे जगह मिल गई जहाँ लाइन में लग गए। I could get into the airport. So security check हो गया. I am now confident that I'm not gonna miss the flight. I am such an anxious traveler. ट्रैवलिंग में ये होता है ना कि जब तक फ्लाइट के आसपास में पहुँचे तो मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी, कोई चीज़ मेरे बैग में होगी। एंड इतनी बार आई ट्रैवल टू न्यूयॉर्क एंड टू अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट इट स्टिल गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ दैट एंजाइटी। आई नो एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल एट द एंड। Welcome to Bangalore, people. Welcome to... Sorry. So now we have to search for an Uber in Bangalore. So मैं बैंगलोर पहुंच गया हूँ। मैं बैंगलोर पहुंच गया, अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है। Why don't you do that? If you're not subscribed to the channel, do it right now. So in Bangalore right now, traveling to my hotel. तो चेक इन हो गया है, अब टाइम है रूम के अंदर जाने का। एक्साइटेड। लेट्स गो। And we are here, just like a work room should be, right? All you need is a desk and a bed to sleep and a bathroom to take a bath. Let's see how the view looks on the outside. Nothing, all buildings, so nothing super cool. But yeah, looking forward to spending the next 2 nights here. अब आते ही जो सबसे पहला काम मैं करने वाला हूँ वो है कुछ खाने को ऑर्डर करना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। Let's open the curtain so that there's some light in the room and you can see me a little better. So let's look at the menu and find some food to eat. Okay, I'm super hungry, so going to eat something that is going to be filling. Okay, so I think I'm gonna order, let's order chili chicken, or maybe let's order, maybe chicken biryani, right? But that would be too much. So what should I order, guys? Help me. I know you cannot help me like right now live, so yeah, I'm gonna order maybe a sandwich. Chalo, let the food come and then I'll show it to you guys. Okay, जो सबसे पहला काम होता है यहाँ आके वो होता है कि अपना वर्क स्टेशन सेट कर लो, क्योंकि बहुत सारा काम करने को मिल सकता है।
इसको सेट करते हैं फटाक से। एंड हियर वी गो, वी रेडी। चलो शुरू करें काम और फिर थोड़ी देर में आपसे फिर बात करेंगे जब हमारी बिरयानी आएगी। इसी के साथ हमारा खाना आ गया है। दैट लुक्स डिलिशियस। व्हाट ऑल डू वी हैव मैन? सैलेड आल्सो, एंड देयर इज समथिंग इन दिस आल्सो व्हिच आई डोंट। ओह, वी हैव पापड़ आल्सो। परफेक्ट। चलो फिर लेट्स डिग इन। व्हाई शुड वन वेट व्हेन द फूड इज हियर? खाने की खुशबू से जो हमारा काम होता है वो बेचारा साइड हो जाता है और हम खाने पे आ जाते हैं। Just this papad to die for. I've not even got into the biryani yet. अच्छे बने हुए राइस with some onion and so good. I was so hungry. I was dying. See, work vacations can mean good food also. So yeah, to my family, miss you guys. If you would have been here, तो हम ये बिरयानी खुद मिल के खा रहे होते चारों. But because you're not here, I'm gonna make the most of it and enjoy it on your behalf also. जनरली इतना सारा काम होता है सारा दिन की भाग दौड़ ही लगी रहती है, बट अभी काम है, बट खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है. चिलिंग, हरी मिर्च भी है. एंड पापड़ आई थिंक रसम के साथ मिलता होगा. शाम में अगर मौका मिला तो चल के रसम और साउथ इंडियन खाना भी खाएंगे. अगले 2 दिन में पक्का खाएंगे. सो इस बैंगलोर ब्लॉग में आपको साउथ इंडियन कोई ना कोई खाने का वैरायटीज़ ज़रूर मिलेगी, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो चाहे लंच में डिनर में. ओके, मैं खाते खाते थक गया हूँ. मैंने सबसे पहले सैलेड खा लिया तो उससे मेरे को ऐसा लगा मेरा पेट भर गया है, बट आई एम स्टिल गोइंग ऑन. अब इस लास्ट बाइट के लिए आप लोग मेरे पास आ जाइए, क्योंकि एक्चुअली मेरी लास्ट बाइट बची है. एंड वी हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग दैट डिड नॉट सीम, एंड वी हैव डन इट. आई मीन आई हैव डन इट इन दिस केस, बस यू हैव बीन पेशेंट टू वॉच मी ईट एंड फिनिश एंड डिवोर दिस बिरयानी. मिलते हैं कुछ देर में अगले ब्लॉग में. उसमें बात करेंगे आगे कहाँ चलना है, क्या करना है बैंगलोर में. अभी के लिए यहीं पे इसको खत्म करता हूँ. आई होप आप लोगों को पसंद आया हो. अगर आप मेरे और ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए क्या देखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. एंड आई डेफिनेटली डू दैट. Ignited Neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So why don't you go ahead and do that?